Good afternoon, everyone. My name is Hitesh Angit from Mumbai Support, and I welcome you all to all this 5-day webinar. Today is day 2, and we're going to discuss about the different types of breakouts and the candle patterns. So I'll start with this the small revision on the day 1 summary. Okay, so that it will help you to link with day 2. So yesterday we discussed about the rising fall last and buzz, which actually give you a idea that if you want a candle formation which is continuously rising, so that you can use this condition. And the second condition is falling for last and buzz, which is exactly a vice versa for this rising for last and buzz. Okay, so suppose if you wanted a candle which is having a consecutive 2-day low or 3 consecutive day low, so that you can use this falling for last and buzz. In the same way, we have condition number 3, 4, 5, which is related to the price. So that suppose if someone wanted a stock which is more than 300, 400 or 500, or maybe a number which you wanted to use, so accordingly the price you will get a filter. The condition number 6 and 7, which is a condition where it will compare with the previous day high low. So your current day open is compared with the previous day high or the previous day low. Suppose if you use a condition open above previous bar high, so it will give a result which is actually open above previous day bar high, and it can touch the previous day bar high or it cannot be. So if you wanted a stock like that, you can use this condition. And the condition number 7 is exactly opposite of the price bar high, where we use open below previous bar low, where we use open is comparing with the previous bar low. So you can use that for bearish. Gap up still open and gap down still open is similar to the open above previous bar high, but the major difference is in gap up still open, none of the body part is touched with the previous candle high or low. Okay, and condition number 10, 11 are a condition where you will get a green body or a red body, so that we can use this for forming. And the last two condition, green body for last and buzz, which means we wanted a continuous number of same color candle. Like suppose if I wanted 5 green candles, so I can use this condition number 12. And for red candles, I can use condition number 13, which is red body for last and buzz. Okay, so this was a summary of day 1. Now we continue with day 2. Okay, where we use this condition in a technical query and will filter out the stocks. Okay, so this is a summary of day 2. So I'll start with the first condition, which is inside bar. So suppose if someone wanted a stock where previous day candle was a mother candle and current day candle was inside the mother candle, so that you can use this condition where the current body is between the previous day high low. So we can use this combination possibility where suppose if someone wanted to use green versus green or red versus red or green versus red or red versus green. So suppose if you wanted this combination in your inside bar, so we can use this. So now suppose I wanted to create this query. So first I have to go to spider. Okay, in that we have to go to the technical query. So now suppose if I wanted to create a inside bar candle, so for that I have to go to price Ohlc. In that I have to give a parameters for period, and now I use inside bar. Okay, so when we talk about inside bar, so it will only take one candle inside. Okay, so suppose now if I run on NSE, this is NSE FNO group. Okay, so when I click on this run, okay, so I'll get the stocks which is actually making a inside bar. Okay, so you can see this top and this is the bottom. Okay, your current candle is between the previous day high and low. Okay, so in short, अगर मैं कोई कैंडल ढूंढ रहा हूं जहां पर मुझे प्रीवियस डे
हाई एंड लो के बीच में मुझे चाहिए, सो वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके, इन द सेम वे कि मैंने यहाँ पे बताया कि पॉसिबिलिटी है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे जाके इसके साथ में जो मुझे ग्रीन बॉडी ग्रीन या रेड बॉडी रेड जो मेरे को चाहिए, मैं यहाँ पे एडिशनल कंडीशन ऐड कर सकता हूँ। जिससे क्या होगा ना कि मुझे अगर लास्ट कैंडल भी ग्रीन चाहिए एंड करंट कैंडल ग्रीन चाहिए और प्रीवियस कैंडल भी ग्रीन चाहिए, सो प्रीवियस कैंडल के मैं 1 डाल सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज एज जब कल हमने डिस्कस किया था कि बैक बार मीन्स हम प्रीवियस बार को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने 1 डाला और यहाँ पे करंट डे पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने यूज किया ग्रीन बॉडी 0। ओके, सो जैसे मैंने ये ऐड किया, नाउ अगर मेरे को चाहिए तीनों कंडीशन साथ में होना चाहिए, तो आई विल यूज C1 कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ओके, एंड कंडीशन 3। अगर तीनों कंडीशन जैसे फुलफिल होगा तो ही हमें इनसाइड बार दिखाएगा, बिकॉज मैंने डिफाइन कर दिया। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर सपोज अगर मैं लास्ट कैंडल को, ये प्रीवियस कैंडल बिकॉज यहाँ पे 1 है, अगर मैं ये करंट कैंडल और मैं रेड कैंडल कर देता हूँ, ओके, सो हमारा क्या बैटरी मुझे मिलना ही चाहिए स्टॉक्स में स्कैनिंग में। ओके, आप चेक करो, ये देखो हमारा क्या। सो सेम वे जैसा हमें चाहिए क्वेरी वैसा हम क्रिएट कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निकल क्वेरी, दिस कंडीशन। ओके, सो ये कंडीशन है जो हम यूज करेंगे इनसाइड बार का। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर 1 कैंडल। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी है, वी कैन क्रिएट ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड रेड ग्रीन। ओके, नाउ वी गो टू द सेकंड कंडीशन which is outside bar। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट कैंडल का जो हाई एंड लो है वो प्रीवियस बार से ऊपर और नीचे है। ओके, सो इफ आई यूज प्रीवियस बार हाई, ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सॉरी ये एक्चुअली प्रीवियस बार नहीं, ये करंट बार का हाई है। ओके, सो प्रीवियस बार को जो हाई लो उसके आगे बाहर है ये। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिस इज आउटसाइड बार, मॉडिफाई, उसको मैं रन करता हूँ। तो अगर आप देखो ये एसीसी जो है ये हाई और ये हाई। ओके, सो दिस कैंडल्स हाई इज 2391 एंड यही कैंडल का लो है वो 2301। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, करंट कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर होना चाहिए और करंट कैंडल का जो लो है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सो ये टोटली आउटसाइड बार है, जो प्रीवियस कैंडल के पूरा कवर किया है करंट बार ने। ओके, सो ये है अदानी, जो एग्जैक्टली सेम है कि प्रीवियस कैंडल का हाई और करंट है कैंडल का हाई, तो करंट कैंडल हाई इज ग्रेटर देन प्रीवियस कैंडल हाई। ओके, और लो, करंट कैंडल लो अगर आप देखो वो नीचे है प्रीवियस कैंडल के लो से। सो बेसिकली करंट कैंडल कवर्स द प्रीवियस डे मूव। ओके, सो ये भी सेम कंडीशन है, दिस कंडीशन इज ओनली अप्लाई फॉर वन सिंगल कैंडल, because if someone wanted a more than one candle, for that we have different condition, so I can use this condition. Same way, suppose if someone wanted specify the color, the same way we will give from here the same formation that we did in the previous condition, green body red body। okay, so जब हम इसको रन करेंगे हमें exactly वही चीजें मिल रही है, previous candle is green, current candle is red। ओके, सो ये कंडीशन हम यूज करेंगे आउटसाइड बार के लिए। सो कॉम्बिनेशन इज ऑलमोस्ट द सेम जो हमने इनसाइड बार में देखा था, ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड और रेड ग्रीन। सो ये फॉर्मेशन हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमने प्रीवियस डे सीखा था कि रेड बॉडी ग्रीन बॉडी को यूज करके हमने बनाया। ओके, सो ये है आउटसाइड बार। नाउ यहाँ पे आता है जो कंडीशन नंबर 3 है, वो इनसाइड बार फॉर लास्ट n बार्स। ओके, मतलब हम यहाँ पे डिफाइन करें कि मुझे कितने बार्स इनसाइड चाहिए कंडीशन में। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ क्वेरी में, यहाँ पे कंडीशन है इनसाइड बार एंड आउटसाइड बार। सो इसके अंदर ही मुझे यहाँ पे नीचे देखना है, एग्जैक्ट इनसाइड बार आउटसाइड बार के नीचे ही
इनसाइड बार फॉर लास्ट n बार्स। इसको मैं क्लिक करूंगा, इसको नंबर ऑफ बार्स मुझे जितने चाहिए मैं उतने यूज करूंगा। ओके, सपोज इफ आई वांटेड 3, सो मैं 3 ले लेता हूँ। ओके, तो जो भी आप बार्स सिलेक्ट करोगे वो उतने इनसाइड होंगे एक्सेप्ट द मदर कैंडल। ओके, तो अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैंने यूज किया और मैं खाली इसको कंडीशन जो 1 है पहले मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे रन किया, सो खाली कोल इंडिया, फेडरल एंड सन फार्मा ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कोल इंडिया से। ओके, सो यू कैन सी इन कोल इंडिया यहाँ पे आपको 3 बार इनसाइड है उसके। ओके, सो अगर आप देखो ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो इसके बीच में चल रहा है। ओके, so now we'll get a 3 inside candles. Same way, if I use a Federal Bank, 3 inside candle with different colors, because हमने अभी तक color define नहीं किया है, because currently I am only using inside bar condition for last n bars. Now third condition है Sun Pharma. Okay, अब देखो ये current candle है, उसके high और उसके low के बीच में ये सारी चीजें चल रही है। So in short, we are using a 3 inside bar candle condition. अगर आपको उसके अंदर डिफाइन करना है कि जो मदर कैंडल कौन से कलर की होनी चाहिए या फिर जो इनसाइड कैंडल उसके कलर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो भी आप सेम वे से ऐड कर सकते हो। ओके, सो ये आप यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग आउट इनसाइड बार फॉर लास्ट n बार्स। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनसाइड बार्स है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। जब आप यहाँ पे जब डबल क्लिक कर रहे हो, सो विल गेट अ ऑप्शन नंबर ऑफ बार्स। ओके, सो दिस विल हेल्प टू फाइंडिंग आउट। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 5 डालूंगा तो अगर कोई रहेगा तो आएगा, अगर मैं 2 डालूंगा तो जो रहेगा वो आएंगे। सो अगर मैं यहाँ पे 2 यूज करता हूँ और अब अगर मैं रन कर रहा हूँ, ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंडीशन में टिक करना है, कंडीशन में टिक किया है और रन। सो मुझे क्या दिखा रहा है? टाटा कंजम्पशन। ओके, तो 2 बार्स में कौन सा है? वो खाली एक ही स्टॉक है, वो है टाटा कंजम्पशन। ओके, सो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो नाउ अब जो थर्ड कंडीशन है ये हमने कंप्लीट की है। ओके, अब आएंगे हम फोर्थ कंडीशन पे, विच इज आउटसाइड बार। ओके, सो आउटसाइड बार जब आप यूज करोगे, सो जो करंट कैंडल है उसने लास्ट जितने भी कैंडल्स आएंगे उसके हाई एंड लो को ब्रेक किया रहेगा। जैसे कि आप करंट इमेज में देख रहे हो, योर करंट लास्ट बार इज हायर देन द लास्ट 3 बार्स हाई एंड लो। ओके, तो सेम वे यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ आउटसाइड बार्स जितने भी हम ऐड करेंगे उतने बार उसके उन कैंडल्स के बाद वो आउटसाइड बनाएगा। ओके, तो सेम वे आपको यहाँ पे कंडीशन में जाना है, यू कैन मॉडिफाई। ओके, और आप अलग से क्रिएट कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आउटसाइड बार फॉर लास्ट n बार्स, मैंने यहाँ पे की और यहाँ पे मैंने डाला 3 बार्स। ओके, पहले मैं चेक करता हूँ 3 बार्स में कोई है या नहीं। मैंने मॉडिफाई किया, उसको मैं करता हूँ रन। ओके, सो ये है 3 बार्स में। सबसे पहले आता है ACC। ओके, सो यू कैन सी करंट बार्स हाई एंड लो इज कवर्ड बाय द लास्ट 3 कैंडल्स। सो करंट बार ने सारा जो कवर जो हाई लो का जो फॉर्मेशन है लास्ट 3 कैंडल्स है उसको कवर कर दिया। ओके, देन अंबुजा सेम वे लॉन्ग कैंडल। ओके, अब यहाँ पे आप चेक करो ये कैंडल है बजाज फाइनेंस। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करना भी चाहता हूँ, इफ आई वांटेड टू प्लॉट हाई एंड लो, सो मुझे उसके लिए यू प्रेस करना है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो आप चेक करो, देखो ये लाइन ये हाई हो गया एंड ये लो हो गया। Okay, so which is your current candle high and low is greater than last 3 candles. Okay, so ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। Okay, same way this is Bank of Baroda. So out of total 200 stocks, I am getting only 23 stocks. And then उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी की जो कंडीशंस अगर आपको ऐड करने हैं उससे वो और फिल्टर होके मिलेगा आपको। So basically अगर आपको इंडिकेटर वगैरह ऐड करो तो आप साथ में ऐड कर सकते हो। So this is basically for price conditions. ओके, तो ये आपका है कंडीशन नंबर 4 जहां पे हमने आउटसाइड बार फाइंड आउट किया है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंडीशंस ऑफ ब्रेकआउट। ओके, सो ब्रेकआउट इन टर्म्स, सपोज अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करते हैं उसके हाई
या लो के नीचे क्रॉसिंग होता है, तब हम उसको जनरली एज अ ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। एक डिमांड और एक सप्लाई जोन को ब्रेक कर रहा है, देन वी कंसिडर एज अ ब्रेकआउट। ओके, सो बेसिकली ये एग्जांपल है, ओके, वेयर वी कंसिडर कि करंट डे 6th डे है, ओके, एंड करंट डे के साथ प्रीवियस जो है वो 5 डेज को हम कंसिडर करेंगे एंड करंट डे उसको ब्रेक कर रहा है। ओके, सो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट 1 एंड ब्रेकआउट 2 तीनों में कंडीशन सेम ही है, ओके, फॉर्मेशंस, बट उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम देखेंगे। सो विल टेक 6 डे एज अ बेस। ओके, सो अगर आप देखो, सो अपवर्ड ब्रेकआउट 1 की कंडीशन ये है कि आपके जो लास्ट जितने नंबर ऑफ बार्स अगर आप ले रहे हो, ओके, उसके साथ वो कंपेयर करेगा, हर एक के साथ वो कंपेयर करेगा। ओके, सो लाइक एग्जांपल, अब यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल में देख रहे हो कि करंट डे डे 6 का जो क्लोजिंग प्राइस है, ओके, बिकॉज इट्स अ ग्रीन कैंडल, जो टॉप में वहां पे है वो ये क्लोजिंग है। ओके, ये क्लोजिंग है, तो इस क्लोजिंग के आसपास अगर हम चेक करें तो ये मुझे क्या दिखाएगा कि हाँ, ये जो कैंडल है इसका क्लोजिंग लास्ट डे 5, डे 4, डे 3, डे 2 और डे 1 इन सब के ऊपर है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे वो जो इनपुट जो हमने यूज किया रहेगा उसके बाद वो कंपेयर करेगा लास्ट जितने भी कैंडल्स होंगे। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे कंडीशन में, इसको मैं यहाँ पे लूंगा प्राइस ओएचएलसी के अंदर, पैरामीटर सेम डेली रखा मैंने, कंडीशन मैंने यहाँ पे यूज करता हूँ अपवर्ड ब्रेकआउट। ओके, सो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यूज का एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट यूज कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओके, सो अगर आप जो भी चीज आपको कंपेयर करना है सर्टेन डेज से, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। करंट सिनारियो में आई एम यूजिंग क्लोज। ओके, सो अगर मैं क्लोज ले रहा हूँ तो मुझे कितने डेज का लेना है, सो आई चूज 5th। ओके, सो नंबर ऑफ 5, सो अगर मैं करंट डे मेरा 6th डे है तो मैं लास्ट 5 डेज को कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, so in upward breakout I'm selecting a close as an input and I'm choosing a last 5 bars except 2 days. Okay, so it will compare the last 5 bars and accordingly it will give a result. Okay, so अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसको मैंने ऐड किया, ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कंडीशन में देख रहा हूँ C1, उसको मैंने क्लिक करके मैंने यहाँ पे हटाया और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। ओके, मेरे को क्या, चोला फाइनेंस। ओके, सो चोला फाइनेंस का जो रिजल्ट्स है, करंट कैंडल का जो क्लोज है, वो अगर आप देखो वो लास्ट कैंडल के ऊपर, उसके पहले के जो लास्ट 5 कैंडल्स है, ओके, 1, सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम हियर, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6। तो डे 6 वो लास्ट 5 डेज का जो भी है हाई या क्लोज या ओपन या लो, जो भी हम इनपुट यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हायर ही होगा। ओके, सो इट्स इन राइजिंग। सो इन शॉर्ट, द लास्ट 5 डेज के ऊपर जो भी कैंडल रहेगा उसका तो कंपेयर करेगा, ओपन, हाई, लो, क्लोज, एनी इनपुट। सो ये हम यूज कर रहे हैं इन अपर ब्रेकआउट 1। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसके और एग्जांपल्स के लिए मैं ग्रुप चेंज करता हूँ एक बार के लिए एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ निफ्टी 500 और मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे वो रन होके मुझे जो पहले एक स्टॉक मिला था जो निफ्टी 200 में था, अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 12 स्टॉक्स इन निफ्टी 500। सो अदानी ग्रीन, अब चेक करो लास्ट 5 कैंडल्स का जो करंट कैंडल का जो क्लोज है वो लास्ट 5 कैंडल्स के ऊपर है। ओके, यहाँ पे करंट कैंडल जो है वो लास्ट 5 कैंडल्स के ऊपर है, करंट कैंडल जो क्लोज है, अब देखो तो वहां पे, बिकॉज इट्स कंपेयरिंग ओनली विद द क्लोज। ओके, बिकॉज अगर मैं इनपुट अगर मैं हाई लेता सो वो लास्ट कैंडल के हाई से ही कंपेयर करता। ओके, तो जो करंट कैंडल का जो हाई है वो लास्ट 5 कैंडल्स के हाई के ऊपर ही होगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं इन्फीबीएम पे क्लिक कर रहा हूँ,
सो आप चेक करो ये जो क्लोज है वो 1 2 3 4 5 लास्ट 5 कैंडल्स के ऊपर ही है। सो इन शॉर्ट ये आपको फाइंड आउट करके ये देगा कि जो स्टॉक्स या जो इनपुट आप ले रहे हो वो सर्टेन बार्स के ऊपर होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 10 यूज किया होता तो वो लास्ट 10 कैंडल्स को कैलकुलेट करता एंड इट विल गिव रिजल्ट्स। ओके, सो ये वीमार्ट है। सो दिस आर द एग्जांपल्स दैट वी कैन सी एंड वी कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन। ओके, सो एक्चुअली इसकी कंडीशंस क्या है एक बार रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। ओके, so in this current scenario I use a parameter of 5 candles. Okay, so first यहाँ पे है कंडीशन की 5 कैंडल्स हमने जो इनपुट यूज किए हैं उसे हमें यूज करना है एंड हाईएस्ट हाई फ्रॉम लास्ट डे 1 टू डे 5। अब हाईएस्ट हाई क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट क्लोज हो गया ये सिनारियो में। वो सिनारियो मैंने हाई यूज किया था बिकॉज मैं हाई के साथ कंपेयर करता। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ हाई लेके, ओके, सो मुझे यहाँ पे लास्ट 5 डेज का हाई दिखा देगा एंड अब मैं रन करूंगा तो जो कैंडल लास्ट 5 डेज के हाई के ऊपर है, लाइक ये जो कैंडल है ये करंट कैंडल हाई है, सो लास्ट 5 कैंडल्स के हाई के साथ कंपेयर करेगा। ओके, सो अपोलो टायर current candle high is comparing with the last 5 days candles high, so it's higher than the last 5 days candle. Okay, so it will give a results. Now day 6 selected column is more than highest high value than in an upward breakout. So जो day 6 है उसका वो जो last 5 days candle है उसके ऊपर उसका वैल्यू होगा। Okay, so in short current candle is higher than the last 5 candles input. Okay, so ये था हमारा upward breakout. Now we see the downward breakout. Okay, so same way जो लास्ट 5 कैंडल्स होंगे उन्हीं का हाई लो यूज किया जाएगा, बट इन दिस सिनेरियो ये कंपेयर होगा लो से। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि जो लास्ट 5 कैंडल्स है उनका जो लोएस्ट लो है या जितने भी कैंडल्स का जो लोएस्ट पार्ट रहेगा, अगर मैं इनपुट यूज कर रहा हूँ एज अ क्लोज, सो जो लास्ट 5 कैंडल्स का जो लोएस्ट क्लोज रहेगा उसके साथ एक करंट कैंडल के साथ कंपेयर करेगा और क्लोज जो है वो करंट कैंडल का उन सारे लोएस्ट फॉर्म से नीचे होगा। ओके, सो पहले हम इसका देखते थे कंडीशन क्या हो गया। डाउनवर्ड ब्रेकआउट कंडीशन फर्स्ट पैरामीटर इज इक्वल्स टू 5 कैंडल्स। ओके, जो हम यूज करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे जैसे मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया, ओके, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्लोज, तो अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लास्ट 5 कैंडल्स मॉडिफाई, उसको मैं रन कर रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे एबीडी कैपिटल लेता हूँ तो लास्ट जितने भी कैंडल्स है जो मैंने क्लोज लिया उन सबसे करंट कैंडल का लो है वो नीचे है। ओके, मैं अगर अल्केम ले रहा हूँ तो उन लास्ट कैंडल्स के लो के वो नीचे है। अगर मैं बैंक इंडिया ले रहा हूँ तो लास्ट 5 कैंडल्स के लो के नीचे क्लोजिंग है। ओके, सो इन शॉर्ट हमें ये दिखा रहा है कि जो लास्ट जितने भी कैंडल्स रहेंगे उनके लोएस्ट लेवल के नीचे करंट क्लोजिंग रहेगा। ओके, सो दिस इज अ डाउनवर्ड ब्रेकआउट। ओके, सो यहाँ पे आप देखो सिलेक्टेड कॉलम वैल्यूज लोएस्ट लो वैल्यू एंड इट्स एन डाउनवर्ड ब्रेकआउट। ओके, सो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज अपवर्ड ब्रेकआउट 2। अब इसमें फर्क क्या है 1 और 2 में? जनरली 1 में खाली वो कंपेयर कर रहा है लास्ट सर्टेन डेज के वैल्यू के साथ। ओके, बट अगर मैं सेम टाइम पे अगर मैं देखूं, सो अपवर्ड ब्रेकआउट 2 में फर्क ये है कि जैसे हमने देखा कि इनसाइड बार्स होते हैं, वैसे ही एक कैंडल्स के अंदर कितने इनसाइड बार्स होने का जब वो ब्रेकआउट देगा वो हमें स्टॉक्स निकाल के यहाँ पे फिल्टर करके देगा। ओके, सो बेसिकली इफ आई यूज अपवर्ड ब्रेकआउट 2 और अगर मैं कंडीशन ले रहा हूँ क्लोज, ओके, सो अगर मैं 5 बार्स ले रहा हूँ मॉडिफाई किया मैंने, ओके, सो क्या करेगा ये जो भी स्टॉक्स है जो उसके बीच में रहेंगे, ओके, वो आपको यहाँ पे निकाल के देगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ, 5 बार्स में नहीं दिखा रहा है। ओके, सो आई यूज 3।
ओके, अब मुझे क्या दिखा रहा है, इन्फी बीम दिखा रहा है। सेम वे अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर मैं 2 बार्स लूँ तो 2 बार्स दिखा देगा, 1 बार लूँ 1 बार दिखा देगा। सो मैक्सिमम स्टॉक्स मिले तो हम ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं उस चीज के बारे में। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्टॉक्स, ओके, ये इन्फी बीम अगर मैंने क्लिक किया, ओके, सो आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेम वे योर करंट कैंडल इज हायर देन द लास्ट 5 डेज, जो हाई लो है उसके ऊपर है, बट द डिफरेंस इज इनसाइड बार के बाद ब्रेकआउट किया है। ओके, सो अगर मैं करंट कैंडल अगर मैं देखूँ, सो उसके जो लास्ट जो कैंडल जो 5 कैंडल्स है उसके हाई एंड लो के ऊपर क्लोजिंग है, बट उसके पहले वो साइडवेज था। ओके, सो यहाँ पे वो हमें देखने मिलेगा लाइक सेम वे जो इन्फी बीम है। ओके, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिया है 3, ओके, upward breakout 3. So if I use a number of bars 3, so it will take 3 inside bars. Okay, so I'll plot. Okay, so I use 3 number of bars. So अगर मैं कंपेयर करूँ प्रीवियस कैंडल से, ओके, तो प्रीवियस 3 कैंडल वाज इनसाइड, उसके पहले एक मदर कैंडल है। ओके, सो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो 3 इनसाइड बार के बाद जो वो ब्रेकआउट हो रहा है, दैट विल बी कंसिडर एज अ ब्रेकआउट 2, अपर ब्रेकआउट 2। सो सेम वे अगर मैं 5 बार्स यूज कर रहा हूँ तो वो फ्रॉम दैट मदर कैंडल यहाँ पे जो कंपेयर करें उसके बीच में 5 इनसाइड बार्स होने चाहिए, देन वो करंट बार ब्रेकआउट दे रहा है। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 5 लिया तो डे 1 का जो हाई लो है उसके बीच में डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और जो डे 6 जो करंट डे है वो उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, सो ये चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली जो इनसाइड बार्स होते हैं उसका परफेक्ट जो हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन जो ऐड करनी पड़ती थी कि हाँ कि कितने बार्स के बाद वो ब्रेक करेगा, सो वो ऑलरेडी एडेड है इन टर्म्स ऑफ अपवर्ड ब्रेकआउट 2। सो यहाँ पे आपको ये मिल गया सेम चीज MRPL। ओके, अगर MRPL को देखो तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ बार्स 3 लिए थे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम चेक करने जाएं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यू यूज किया मैंने, ओके, फॉर प्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, 1 2 3, ओके, 3 कैंडल्स के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। तो सेम भी जितने भी आप कैंडल्स यूज करोगे, ओके, दैट विल गिव अ ब्रेकआउट। सो 1 2 3, तो सेम वे आप जितने आपको कैंडल्स चाहिए आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन यूज द इनपुट एज वेल। ये मैंने क्लोजिंग लिया है। सेम वे अगर आपको हाई चाहिए तो आप हाई यूज कर सकते हो, ओपन चाहिए तो ओपन यूज कर सकते हो। सो इन शॉर्ट दिस विल गिव अ प्रॉपर साइडवेज ब्रेकआउट। ओके, सो इसे कंडीशंस ये है, पैरामीटर्स 5 कैंडल्स मार्क हाई लो ऑफ डे 1। ओके, मतलब अगर मैंने 5 डेज लिया तो उसके हाई लो अगर आप चेक करोगे उसके मिडल में मिलेगा। ओके, जैसे ये हो गया, दिस इज डे 1। ओके, बिकॉज मैंने 3 कैंडल्स यूज किया तो 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ वन। सो अगर मैं 5 ले रहा हूँ बिकॉज 5 में मुझे कंडीशंस करंट डे में कोई ऐसा फॉर्म नहीं हुआ है, ओके, जहां से वो मुझे रिजल्ट्स मिले। ओके, सो फ्रॉम डे टू डे 5 high should be below day 1 high and low should be above day 1 low। मतलब इन शॉर्ट आपके जो डे 2 से लेकर डे 5 के बीच में जो हाई एंड लो है वो डे 1 के मिडल में होने चाहिए। ओके, सो दिस विल गिव अ रिजल्ट्स of sideways, and day 6 which is the column value should be about day 1 higher than its closing, or the whatever the input that we are using, that should be higher than the last certain bars. Okay, so that will give us a result. So this is an upward breakout 2. Now
we move to other condition, which is downward breakout 2. Okay, it's the same opposite of the upward breakout 2, where a candle is in a sideways and then it's breaking a low of those last 5 candles. Okay, so अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, बिकॉज आज मार्केट नेगेटिव था, सो देयर विल चांसेस कि हमें देखने मिलेगा. ओके, सो 5 आवर्स में एक ही मिला है, स्पंदना. ओके, सो यहाँ पे करंट डे इज डे 6, दिस इज डे 5, डे 4, डे 3, डे 2, डे 1. ओके, सो यहाँ पे जो मदर कैंडल है, ओके, सो जो जो करंट कैंडल है उसका जो लो है वो लास्ट सर्टेन कैंडल्स के नीचे होगा. ओके, सो यू कैन कंपेयर कि जो मदर कैंडल उसके अंदर लास्ट 4 कैंडल्स है एंड देन टुडे इज ब्रेकिंग डाउन. ओके, सो दिस वी कैन यूज इन अ डाउनवर्ड ब्रेकआउट 2. उनके सेम वे, अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 3 लेना है तो आई कैन यूज 3. ओके, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइक दिस इज ये डे 4 हो गया, डे 3, डे 2, डे 1. इसका जो हाई एंड इसका जो लो है, करंट कैंडल इज क्लोजिंग बिलो दैट. सो इन शॉर्ट, सर्टेन साइडवेज के बाद जब ऊपर या नीचे, if it's an downward breakout, then it's closing below that low, and if it's an upward breakout, then it's closing above the high. Okay, so ये दो conditions, upward breakout 2 and downward breakout 2, you can use. Okay, so ये conditions है. Mark high low on day 1, from day to day 5 high should be below day 1 and low should be above day 1. And last part is day 6 selected column value should be below day 1 low and its downward breakout. So in short, closing above the last certain candles, if अगर आपने choose किया 5, so it should be closing above the 5 candle high, and it's a downward breakout and it's closing below the 5 candle low. Now is the third condition of breakout, which is upward breakout 3. So basically this candle, suppose if I use number of bars 5 in upward breakout 3. Okay, okay, so now this ABB. Okay, अगर मैंने input use किया है, if I use input as a close, okay, and number of bar 5, so यहाँ से अगर मैं देखूं, so this is day 6, day 5, day 4, day 3, day 2, day 1. Okay, so ये day 1 का जो high है, okay, so ये particular candle से ही compare करेगा. So it will compare the day 5 candle and the current day candle. So this will give a result for day the upward breakout 3. So अगर आप यहाँ पे चेक करोगे the same way, जो previous बार जो भी रहेगा, जो हमने define किया रहेगा, that will be considered as a high low, and उसके साथ ही वो directly compare करेगा. Okay, so condition is upward breakout 3, where we use a candle number suppose as a 5, mark high low of day 1, okay, which was the 5th bar from current to back, and from day to day 5, it's not matter whether it's breaking a high or low, but it will compare with the day 6. Okay, so the current day and the 5th candle day, okay, that is compare with the current day. So in short, it's comparing with the day 1 versus day 6. Okay, so that will show you a result of a upward breakout 3. Same way you can use any other stock, like this is
the ATGL. Okay, so now you can see this is day 6, 5, day 4, day 3, day 2, day 1. Okay, and I'm plotting high and the low, and you can see the current candle close is higher than the day 1 candle. So in short, it will give you a result with that particular candles. So it will compare from day 1 versus day 6. So this is an upward breakout 3. Now other condition is downward breakout 3. So if I use this condition, it's the same way, like if we use a high low of that particular candle, and if it's breaking the low of that candle, then it will give us a downward breakout. Like this is a downward breakout, and if it's using a close and modify, okay, so this will give a result like ACC. Okay, so this is day 6, day 5, day 4, day 3, day 2, and this is day 1. Okay, so this will compare high, low, and current candles close is lower than the day 1's candle. Okay, so this will give us a result in this formation. In the same way, you can see over here, this close is lower than this candle. Okay, this is a day 1 candle. So we can go through this condition. Suppose if you use number of bars 2, so it will compare with the last 2 candles. Okay, so now here you can see parameter. I have taken of 5 candles, mark high low of day 1, and then you can get from day 2 to day 5. It will not, the high and low will not matters for this condition. It will only compare with the day 1 versus day 6. So if I use a column value as a low, so it will compare with the low. So according to the column value, it will give us a results. So now we go to other condition, which is body size of X bar. Okay, so basically when we deal with the candlestick, so body plays an important role. So suppose if someone wanted a long candle which is having a more than certain percentage of body, so that we can use in this pattern with the help of price Ohlc condition, and the condition is body X percentage, body size of X percentage. You can see at the bottom X percentage of bars range. So I can use, suppose if I wanted a candle which is having more than 60% body of its total range. Okay, so suppose 60 to 80, I can add. Okay, so suppose now if you wanted to know, we can add one indicator on the chart. You can add study. There is an formula T2. Okay, formula T2 candle breakup. So once you click, and you can add in all time frame. Okay, so you will get 3 lines. The yellow line is the body, okay, body percentage of the total candle. Green is the upper shadow, and red one is the lower shadow. Okay, so that you can use to identify the trend with the body size or the lower wicks or the upper wicks. So in short, you can bifurcate the body parameters of a particular candle. So now if I run with a candle which is having a more than 60 to 80% body, so if I click, so you can see this is Ohlc Industries. Okay, so when I click on this candle, okay, out of this total range, this body range is more than 60 to 80%. So we always need to give a between number. Okay, so you can see at the right hand side,
the BD is 66.67. Okay, so out of the total range, this is 66.67%. Okay, so Apollo. Okay, the same way, if I click on this, 67.14. Okay, so it's in 67% of this total range. Okay, and the same way, if I use the Bandhan Bank, I can click, and there is an option of a 63.75. Okay, so this is a candle formation with a body size. Okay, so yeah, you can use this the same way. You can see this is the body formula, body size, which is open minus close upon total range, which is high minus low. Okay, so that we can use. This is the formula for body percentage. Okay, now we go to the other condition, which is upper shadow x percentage of bar range. Okay, so suppose if someone wanted to specify the upper shadow of a candle, then this condition we can use. So if I click on this, and if I click on this condition, upper shadow x percentage of bar range. Okay, so if I click on this upper shadow, suppose if I wanted more than 50 to 100 percentage, so 50 to 80 percentage. Okay, so I can use this, and so this is Avas. So this candle is having more than 50 percentage upper shadow. The same way, if I use AU bank in this candle, I'm more than 63 percentage of the upper shadow. The same way, if someone wanted to make a pin bar, or maybe wanted to create a doji, so they can use this condition finding out. So you can see BBTC, which is having a long wick on the upper side, so they can use this condition. Okay, so this is an upper shadow condition, upper shadow for X bar. So we are defining the particular candle with percentage. Lower shadow. Okay, so lower shadow X percentage of bar range. So suppose if I wanted to define the lower shadow of the candle, so I can use this condition. So it's in the price virtual C, and it's below the upper shadow X percentage of bar range. So when I select the lower shadow X percentage of bar range, I can define the lower shadow. Okay, so I can use this maximum percentage as 100, and I can modify. Now, if I click, so I look at this stocks, which is having a long lower shadow. Okay, so I defined as more than 50 to 100. Okay, so this is give a result of Chola holding. Okay, so it's having a long wick at the bottom, so that we can use a lower shadow which is more than 67 percentage. Some if suppose if someone wanted to finding out a pin bar with a lower shadow, then they can create. Okay, so this candle will help you to finding out stocks for who creating a hammer or maybe a hanging man. So this upper shadow and the lower shadow, this condition will help you to finding out the correct stocks. Okay, so this we can use in our technical query with indicators and modify with a better results. Okay, so this is the condition for lower shadow. So yeah, so this is all for today, and we can continue with tomorrow. Okay, we continue with different conditions on column value. Okay, so we'll cover this all these day 3 conditions with the help of column value and the previous day high low. Okay, so that will help you, and also I give you a condition which will helpful for intraday, so that best bullish or best bearish candle results we can use. Okay, so this is all for today, and if you have any issue, just contact on this support numbers, so that we'll
help you. Okay, and for day 3, you will get a link. You can register and you can continue with this webinar.